Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Hemrita Chandolia. Students, today we are going to start another chapter of class 7 science, that is chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. In this chapter we will discuss about what is weather, what is climate and what is the basic difference between weather and climate. And in this chapter we also discuss about the adaptations of animal that they had taken, that they had adopted to that particular climate. Okay students, in today's video we are going to discuss about weather and climate. Students, you remember that whenever you are planning to visit some hill station, you always or your parent always make sure that कि what is the weather there exactly, कि भाई वहाँ बरसात तो ज़्यादा नहीं है या फिर ज़्यादा ठंड तो नहीं है. So what is that? That is the weather condition basically. And students, you notice that कि whenever you are going to school in the morning, you are having a sunny day, but as you reach to the school it becomes cloudy one, and after some time it heavily rains, and after rain you again are having a sunny day, and sometime you see a rainbow also, isn't it? So what is that? It is the changes in the atmosphere of a particular place at that time, isn't it? And you notice that our harvesting of crop is also depends upon the weather. कभी कभी सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छे से सनी डे होगा, उसके बाद अपने आप थोड़ी देर में क्लाउडी हो जाता है, उसके बाद बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर से सनी हो जाता है. These changes in the atmosphere in a very short period of time, it is called weather. And you might have seen the reports on television, on radio and on newspaper, isn't it? टीवी में आता है आज की मौसम की जानकारी, isn't it? और उसमें हमें वेदर फोरकास्टिंग भी होती है कि सी शोर पे आपको नहीं जाना है, या जहाँ ज़्यादा बरसात है वहाँ पर तूफ़ान की चेतावनी है. ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं एंड सुनते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ वेदर बेसिकली? वी कैन से द डे टू डे कंडीशन of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place. Fine. I had discussed the conditions that we are having a sunny day, a rainy, a cloudy, isn't it? So we are talking basically about the temperature, humidity, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, दैट इज़ नोन एज द वेदर ऑफ दैट प्लेस. फाइन स्टूडेंट्स, एंड ऑल दीज पॉइंट्स वी डिस्कस्ड, temperature, humidity, rainfall, wind speed, air pressure, cloud cover, sunshine, these all are the elements of weather. Important question class 7. What are the elements of weather? The main important elements are temperature, rainfall, or you can say the precipitation. In precipitation we are including rainfall, snow, hailstorm, isn't it? And your humidity, your wind speed, all these are the main elements of weather. Fine class. Students, the weather of place depends upon these factors. ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यू आर हैविंग अ सनी डे, दैट मीन्स हमारे पास आसमान बिल्कुल साफ़ है. इफ़ यू आर हैविंग ह्यूमिडिटी, दैट तो आपको लगता है कि नहीं बहुत चिपचिपी वाली गर्मी है. फाइन, इट इज़ हॉट एंड वेट बेसिकली. इज़ दैट क्लियर? एंड इफ़ वी आर हैविंग द रेनफॉल, ऑब्वियस सी बात है हमें हमारे आसपास सब कुछ क्या है? वेट. Fine. Students, the maximum and minimum reading of the temperature of a day is measured by specific thermometers. We already had discussed about the thermometers in previous chapters of class 7, clinical thermometer. Fine. Students, and laboratory thermometer, and the same manner we are having minimum and
maximum thermometer, and these thermometers are used to measure the minimum and maximum temperature of a day. दिन का सबसे कम टेम्परेचर और दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर्स को यूज़ करते हैं. अब क्यों यूज़ करते हैं, दैट आई टेल यू in a short period of time. Students, in the same manner, humidity is also measured in percentage with the help of an instrument that is known as hygrometer. Have a look here. Hygrometer ऐसा होता है. Fine. We are measuring humidity in percentage with the help of an instrument that is known as hygrometer. Another important question, class 7th. Fine. And we are also measuring rainfall by an instrument, and that is known as rain gauge. Is that clear? Students, what is this basically? It is just like a cylinder. Fine. We are using this cylinder like apparatus with a funnel to collect the रेन वाटर. हम ऐसा मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रेन गॉज वी आर मेजरिंग द रेनफॉल कि भाई कितनी बारिश हुई है. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, you might have seen such type of reports or weather reports in newspaper or in television, isn't it? What this report is showing, that in this report we are having the weather report of a week, of a day or the next day. आपकी न्यूज़पेपर में भी एक कॉलम आता है जिसमें हिंदी में लिखा होता है कि मौसम की जानकारी और द वेदर report. In that you are having the information regarding to sunrise, कि भाई हमारे आज सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, and you are having the information of minimum temperature and maximum temperature. अब minimum temperature कब होता है? At the time of early morning, and maximum temperature we are having at the time of afternoon, जब सिर पे हमारे सूरज होता है. isn't it? So students, this type of report कि आपके यहाँ बारिश है या ज़्यादा बारिश है, या टेम्परेचर इतना कम है या ज़्यादा है, आपका दिन कैसा रहेगा, सनी है रहेगा या क्लाउडी रहेगा, या फिर आफ्टर सम टाइम यू अगेन फेस द सनी डे. all these type of information are gathered together and make a weather report, and weather report are prepared by meteorological department of government of any country. India का है IMT. Fine. So we can say the meteorological department of government prepared the weather report of any country. Is that clear? Important question, students. And what they are collecting, basically this department collects the data, temperature, humidity, wind speed, rainfall, etc., and make the weather prediction कि कैसा होगा. प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना कि आज भारी बारिश हो सकती है. कभी टीवी में मौसम की जानकारी ज़रूर सुनना, दैन यू आर गेटिंग वेरी क्लियर कि वो हमें क्या क्या प्रेडिक्शन देते हैं. and that prediction of weather in advance is called weather forecast. Another important question, class, what is weather forecast? Prediction of weather in advance is called weather forecast. गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, भारी बारिश की चेतावनी. These type of format you might have listened or you heard many times in TV. Okay, students. So these type of information in which we are having the sunrise, sunset news, maximum, minimum temperature, and how the day is coming. They may be sunny, they may be cloudy. We are having heavy rainfall. Fine. Or we may have the hailstorm. Nowadays राजस्थान में भी hailstorm काफ़ी हो जाते हैं. ठीक है students, all these type of information in advance is known as what? It is known as weather forecast. Students, now the minimum temperature, I already told you, occurs early in the morning, and maximum temperatures occur generally in afternoon. And student, all these points are very simple, and you can correlate these points to your day-to-day life. You can notice them.
During summers, the afternoons are the hottest, and during winters, morning are coldest. आप कभी भी देखिए, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, जो मॉर्निंग होती है उस टाइम हमारे पास सबसे कम टेम्परेचर होता है, एंड इन आफ्टरनून वी आर हैविंग maximum temperature. And in the same way, the time of sunrise and sunset also change throughout the ईयर. सर्दियों के अंदर सूरज अंकल देर से आते हैं और बहुत जल्दी छिप जाते हैं. गर्मियों में सूरज जो सनराइज़ है वो बहुत जल्दी होता है और सनसेट बहुत देर से होता है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हैविंग लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट winters. Students, very important question arises here कि what is the reason which causes the changing in weather? Fine. सबसे important reason है हमारा sun. Sun is the cause of variation in weather. Fine. आपकी सन की वजह से ही आपके सबसे ज़्यादा वेरिएशन होते हैं किसी भी जगह के वेदर में. Fine class. And along with that, energy absorbed and reflected by Earth's surface, oceans, the atmosphere play important role in determining the weather at any place. Fine class. I hope the concept of weather and the elements of weather are clear to everybody. Students, now another important topic, that is climate. Student, climate is very much similar to weather in hearing. आपने सुना होगा, कई बार हम लोग सोचते हैं कि climate और weather same है. No बेटा, there is a difference between climate and weather. What we call climate? The average weather pattern taken over a long time, you can say 25 years, is called the climate of the place. फाइन. किसी भी जगह की वेदर कंडीशंस को स्टडी करके उसका ऑब्जर्वेशन निकाल के एटलीस्ट मिनिमम फॉर 25 ईयर्स, और उसके बाद जो वहाँ का वेदर कंडीशन हम निकालते हैं, दैट वेदर कंडीशन इज़ नोन एज क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. आपको लगता है कई जगह बहुत गर्म है, some are hot and dry, some are hot and wet, isn't it? And some are extreme cold, some are extreme hot. This is the climate of that particular place. Fine student. And students, you can understand how you can just predict, how you can calculate the climate of a particular place. Basically, just have a look here. Here I'm having the maximum and minimum temperature report of Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir, and I'm having another city, that is Thiruvananthapuram of Kerala. Just look at here students, we are having daily minimum and daily maximum temperature. Fine. अब यहाँ देखो हमने क्या किया कि पूरे साल भर का 1 ईयर का हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का एवरेज निकाल लिया. फाइन. हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फर्स्ट वी आर टेकिंग द मीन ऑफ द average of the month, and after that we are taking the average of the year, and finally on the whole we will take the average of more than 25 years. और एवरेज जो हमारे पास आएगा कि नहीं, इतना टेम्परेचर वहाँ लगभग रहता ही है, then that helps you to predict what is the climate of that particular place. Have a look here, we are having a temperature in minus also, and आप यहाँ देखो जो minimum temperature है it is -2.3, and the maximum temperature we are having after reading this table is 30 degree Celsius. फाइन. कि मतलब मिनिमम इतना है कि बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर, तो मतलब ठंडा है. और हमें पता है जम्मू कश्मीर एक ठंडा है, जिसमें स्पेशली द कैपिटल ऑफ द जम्मू कश्मीर श्रीनगर, इट इज़ हैविंग अ
cold climate, isn't it? गर्मियाँ आती हैं लेकिन इतनी गर्मी नहीं आती है जितनी हमारे राजस्थान में होती है. Fine. Have a look here. Here we are having the minimum temperature, daily minimum temperature of every month. We are, if you read this table, you are getting that 22.2 is the minimum temperature we are having whole in the whole year. The daily maximum temperature what we are having 31.5 31.9 डिग्री सेल्सियस ऑन द whole. जो आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ लग रहा है, you might be have just this 32.6 degree, isn't it? Comparative both the tables, you will observe that कि Kerala is typically hot and wet in most of the time. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ बारिश नहीं होगी, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ सर्दियाँ नहीं आती हैं. सर्दियों का टाइम देखिए आप, नवंबर दिसंबर में भी टेम्परेचर देखो, कोई ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है. एंड जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर देखिए नवंबर दिसंबर में जब सर्दियाँ बहुत पीक पे होती हैं जनवरी में, यहाँ माइनस एंड 8.2, और 8.2 में तो हमारे यहाँ बहुत सर्दी होती है. इज़ दैट क्लियर? और यहाँ का ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा का टेम्परेचर यहाँ रेज ही नहीं होता. सो वी कैन से कश्मीर इज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट एट सम टाइम ऑफ द ईयर, इज़न्ट इट? सो in this way we can get the information of the climate of a particular place. I hope this table is clear to everybody. Students, now what is the basic difference between the climate and the weather? Students, weather is a short term state of the condition of a atmosphere. आपके एटमॉस्फेयर में सुबह तो सनी डे था, अचानक से 1 घंटे के अंदर फिर वो क्लाउडी हो गया, उसके बाद 10-15 मिनट बाद बारिश हो गई, रेनी हो गया, फिर वापस आधे घंटे बाद फिर से सनी हो गया. दैट मीन्स इट इज़ द शॉर्ट टर्म स्टेट. फाइन. और कभी कभी तो ये 1 घंटे में, आधे घंटे में ही चेंज हो जाता है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर. Is that clear, class? And we are calculating, it is changing with the temperature with the days. आप days में कर सकते हैं, but यहाँ पर average weather it will take a long time, approximately कम से कम हमें कितना चाहिए, 25 years for calculating the climate of a particular place. So we can say the climate is a long term pattern of the weather, and weather is a short term pattern of the conditions of that atmosphere at a particular place. Fine, class. Students, you also know that if the temperature is high at a place, so we can say कि वहाँ का climate क्या होगा, that place is hot. ठीक है, कहीं पर हमेशा सिर्फ गर्मी ही रहती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. ओके. If there is heavy rainfall most of the days, then the climate of that place become hot and wet, or you can call it hot and humid. जहाँ पर गर्मी भी तेज़ है और बारिश भी थ्रू आउट द ईयर होती है, दैन वी कैन से इट इज़ हॉट एंड wet. Take the example to understand all this of Rajasthan. Students, you know that Rajasthan is hot and dry. हमारे यहाँ precipitation कम होता है, rainfall कम होता है हमारा जब मानसून सीजन आता है तब हमारे पास होता है, बट नॉट सो मच. वी आर नॉट हैविंग द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. सो व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान? बेसिकली इट हैज़ हॉट एंड ड्राई वेदर. फाइन. हमारे पास कैसा वेदर रहता है? गर्म और सूखा, ड्राई. हमारे यहाँ पे मॉइस्ट या ह्यूमिड एयर नहीं होती है. फाइन. ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर, एंड विंटर्स में हमारे पास कैसा रहता है? कोल्ड एंड ड्राई. Remember, in summers we are hot and dry, in winters we are cold and dry. Dry is still common. Fine, class. Student, this is the condition of Rajasthan basically. Now just move for the northeast of the India. अब northeast areas हमारे जहाँ पर हमें बहुत अच्छा rainfall मिलता है, receives rainfall for most of the year, and hence they are having wet climate. Is that clear?
Fine. Students, in this way, the difference between climate and weather is clear, and I hope you are now able to explain what is climate, what is weather, and what is the basic difference between them, and what are the factors which cause the weather changes in the weather condition. Students, there are several factors which also affect the climate of a particular region. What are they? Let's discuss one by one. First one is the amount of sunlight it gets. Yes, that particular region is getting what amount of sunlight basically. We can correlate this point with that sun is the major region for the changes in the weather. Fine. And second one is distance from the sea. Yes, in Rajasthan we are having hot and dry weather conditions, but when you move towards the coastal areas you will find that if they are hot, but along with hotness they are wet also, they are humid also, because वहाँ पर क्या है, समुद्र है, समुद्र से क्या हो रहा है, पानी का इवापोरेशन, तो हवा में क्या होगी, नमी. So we can call or we can say that distance from the sea is also an important factor which can on which the climate of a particular region can depend. Okay. Second one is ocean currents. Yes, again oceans में जो currents आते हैं they also affect the climate of a region. Okay. Distance from the equator. Yes, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इक्वेटर रीजन कौन सा होता है हमारा. सपोज दिस इज़ योर अर्थ, इट इज स्पेरिकल इन शेप, एंड ये हमारे पोल्स हैं, एंड हियर दिस रीजन वी आर हैविंग क्या, इक्वेटर्स पे क्या है, सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है. सो the distance from the equator of that particular region also affect its climatic conditions. Okay. The next important is temperature and rainfall variation. कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, हम इसको ये कह सकते हैं, टेम्परेचर नॉर्मली सनलाइट से ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, द अमाउंट ऑफ सनलाइट व्हाट वी आर गेटिंग, और एंड समटाइम्स द टेम्परेचर ऑल्सो depends upon the human activities. Now we know that by the combustion of the fuels, isn't it, the temperature of earth is also increasing because of the increasing amount of the CO2. Is that clear? And rainfall variation, कितनी बारिश हो रही है, कितना precipitation हो रहा है, in the form of snow, in the form of hailstorm, whatever we are having. Okay, I hope this topic is clear to everybody. What is the difference between climate and weather, isn't it? Students, now it's time to discuss interesting facts related to this chapter. Very interesting fact that in northern hemisphere, students, the longest day is usually 21st of June. Okay, and the shortest day is 22nd of December. Northern hemisphere में सबसे लंबा दिन जो होता है that is on 21st of June usually, and जो सबसे छोटा दिन है it is on 22nd of December. The first day of summer is the longest day of the year, and the first day of winter is the shortest day of the year. Isn't it interesting कि जो गर्मियों का सबसे पहला दिन होता है वो सबसे लंबा दिन होता है, और जो सर्दियों का सबसे पहला दिन होता है वो सबसे छोटा दिन होता है. Students, somehow you also know that कि on poles, each pole has one sunrise and one sunset per year. Yes, एक साल में एक बार ही sunrise होता है और एक बार ही sunset होता है. That means 6-month day, 6-month night. Isn't it? So in this way this topic completes here. In coming video we will again meet with another topic of this chapter, that is the adaptations of animals to climatic conditions or particular climatic regions. Till then, take care everybody. Thank you.